Let's start with the concept of work, power, and energy. सबसे पहले we are defining work. What is work? It is basically an energy transfer process. So it is energy transfer process. So, for example, whenever you do work, so your energy decreases and someone else gains energy. For example, एक block को अगर अपन जमीन से ऊपर उठाते हैं, so you are doing work. The chemical energy stored in your body is decreased while the potential energy of stone is increased. So here the process involved is work. So work is always an energy transfer process where energy goes from one body to another body. Then how we define this? तो वर्क को क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस तो एनर्जी है एक तरह से, तो इसकी यूनिट्स जो है वो एनर्जी की यूनिट्स ही है, एंड वी गॉट सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ एनर्जी व्हिच इज जूल, से कैपिटल जे से डिनोट करेंगे अपन, एंड इसकी डायमेंशन भी वही है जो एनर्जी की डायमेंशंस हैं, दैट इज m to power 1 l to power 2 e to power -. How to measure work? So work done by a force is defined as by a formula. Work done by a force is defined as W equals to F dot S. This is a dot product between force and displacement. This is the force vector and this is displacement vector. Okay? This is force vector, this is displacement vector. यहाँ तक समझ आ गया सबको? Yes. Okay. अगर force variable हो, so we have to change the formula. This formula is used when the force is constant. So we have to use this formula when F is constant. The force is not changing. F is constant. The force is constant means there is no change in magnitude, there is no change in direction. If the force is variable, then work is calculated by help of integration. For variable force, we calculate work equals to integration of F dot ds over the limits of displacement. Now this is for variable force and this formula is for constant force. What is work? Work is an energy transfer process. Because it is a form of energy which is going from one body to another, it has got same units as that of energy and same dimension as that of energy. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको बेटा सारी बातें? Yes, sir. Okay, let's take a problem. एक क्वेश्चन देखते हैं. Assume करते हैं. There is a body. Say this body is of 3 kg mass. We are exerting some forces on it. See, this is a force which is acting, and this force is equals to 20 Newton, the constant force F1. So another force F2. Say this is equals to 30 Newton, and the angle it makes with horizontal is 30 degrees. So this is another force. This is acting in the rear direction F3, and this is increasing with time, changing with time. Say it's a function of position. तो position के साथ change हो रहा है. Initially the mass is at position. This is x-axis, this is y-axis. And initial position is 0, initially it is a position. This force will change with x. Say this force is minus 2x I cap. This is an x direction. Minus 2x I cap. These are the three forces which are acting. Okay. Now this mass here is displaced along x-axis. Question is find work done by each force as mass displaces from x equals to 0
to x equals to 4. ठीक है बेटा? तो जब x equals to 0 से x equals to 4 जाएगा तो हर फोर्स कितना वर्क करेगा? मास इज ओनली मूविंग इन x डायरेक्शन. ठीक भाई, चलो लेट्स कैलकुलेट. तो वहां 3 फोर्सेस आर देयर एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो. Displacement is along x axis. So we can write the displacement along x axis as this. This is the displacement vector from x0 to x4. This is x0, this is x4. Now, first force is 20 Newton. First force is 20 Newton. The force is constant, so we can apply the formula. The force is constant. F1, which is also 20 I cap, is also an x direction. Displacement is also an x direction. So work done by this force is W1 equals to F1 dot S. Force is 20 I cap. Displacement is 4 I cap. I cap dot I cap is 1. So this is coming up to be 80 joules. समझ आ गया भाई? पहला इसमें किसी को दिक्कत है? वर्क डन बाय फर्स्ट फोर्स में कोई दिक्कत है भाई? F1 में No. लक्षित समझ आ गया बेटा? कार्तिक? Yes. Now we'll calculate the work done by the second force. Now let's calculate second force. तो यहाँ पे जो second force की बात करें तो वहाँ displacement is this. This is displacement from x equals to 0 to x equals to 4. And the force is at an angle of 30 degree. तो जहाँ पे force लग रहा है, this is F2 and this angle is 30 degrees. And this force is also of magnitude 30 degrees. If you take dot product, you have to take cos of 30. So now if we calculate work done by the second force, so we can write W2 equals to F2 dot V. I can still apply this formula because force is constant. Force is 30 Newton, displacement is 4 and cos of 30 degrees. You can simplify this. Cos 30 होता है root 3 by 2. So 120 into root 3 by 2. That is 60 root 3. So this will give you 60 root 3 joules. समझ में आ गया भाई? Second समझ में आ गया? Yes. ये समझ में आ गया बेटा? Yes. All of you are clear with this? Now we'll talk about the work done by third force. जो तीसरा force जो है वो variable है. It is changing with position. So here this requires integration. Let's look at the third force. Work done by the third force. So let's calculate W3. So because it's a variable force, we have to do integration of F3 dot displacement. F3, force 3 is in negative direction. It is minus 2x I cap. Displacement is in positive direction. Dx I cap. By integration. Where x is changing from 0 to x equals to 4. That should be the value of work done. Again, I cap dot I cap is 1 and minus sign is there. So we can write this is equals to minus twice x dx from 0 to 4. ठीक है? वैसे भी बच्चे कहते हैं सर डॉट प्रोडक्ट देखते तो भी नेगेटिव आ जाता. तो फोर्सेस टुवर्ड्स लेफ्ट. Yes. Okay. So this F3 was towards left and displacement was towards right. This was the displacement. The angle between them was 180 degrees. So this dot product will anyway give you negative. So dot product will be a negative one. Dot product जो करोगे आप अपने आप नेगेटिव आएगा ना. The dot product will be negative. क्या ये बात समझ में आ गई भाई? क्योंकि you will write F3 का magnitude, displacement का magnitude and the cos of 180 degree will be there. And cos 180 कितना होता है बच्चों? -1. So this will be a negative value. So work done will turn out to be negative. क्या ये बात समझ में आ गई सबको भाई? Yes. Yes. तो इसलिए वर्क डन इज नेगेटिव. वर्क डन इज नेगेटिव. तो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है. चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं. -2 इज अ कांस्टेंट और x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2. लक्षित नैनिका थोड़ा ध्यान देना बेटा. इंटीग्रेशन में पावर रूल लगता है, उसकी पावर 1 है तो पावर +1 डिवाइड बाय पावर +1 होगा.
तो x की पावर 1 है, तो पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाय पावर प्लस 1। समझ में आ गया ये रूल इंटीग्रेशन का? लक्ष्य क्लियर है बेटा ये वाली बात? Yes, तो sir. तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और x डी को कैसे करेंगे? पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाय पावर, वेरी सिंपल। एंड लिमिट कहां से लगानी है? 0 से 4 तक। क्या यहां तक समझ आ गई बात? Yes. Okay, let's simplify this. So work done by third force is converted to -2। पहले x की जगह अपर वैल्यू, अपर लिमिट पुट करते हैं, तो x की जगह 4 रखेंगे, तो 4 की पावर 2 डिवाइड बाय माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, 4 की जगह 0 रखेंगे x की जगह, तो 0 टू पावर 2 डिवाइड बाय 0 टू पावर 2 इज 0 ओनली, तो गलत हम दिखा रहे हैं, 0 हो जाएगा उसका। फिर 16 4 का स्क्वायर, 16 डिवाइड बाय 2 दैट इज 8, 8 into 2 16। तो इसलिए वर्क डन बाय द थर्ड फोर्स इज कमिंग अप टू -16 जूल्स। क्या सबको क्लियर हो गई ये बात? Yes. Yes. तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालना सीख लिया भाई अपन ने, ये दोनों कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना सीख लिया, ठीक है? ऑल ऑफ यू आर थ्रू विद दिस? Yes. Yes, sir. ऑलराइट, ओके, लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम नाउ। अब थोड़ा और दिमाग चला रहा, इमेजिन करते हैं बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हियर यू हैव अ इंक्लाइन, here this angle is 37 degree. The angle of the incline is 30. This is a rough incline. This is a rough incline. This is a rough incline. यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू बताओ 0.1. This is the friction coefficient. Now, the base of this incline is 5 meters. The base of incline is 5 meters. Now, a block of 10 kg. This is a block of 10, and you are applying a force and slowly pulling this up, and you are slowly moving this up from bottom to top. An agent moves the block slowly, from bottom of incline to top. Question is, find work done by, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फिर फोर्स ऑफ एजेंट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका, तो लास्ट पार्ट में बाय नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? So as this block is moved from lower end to upper end, you have to find how much work is done by the force of gravity, how much work is done by friction force, how much work is done by the agent, and how much work is done by the normal. Question clear है बेटा सबको? Yes. Okay. I'm giving you 5 minutes. Each one of you will answer all the parts. ये भी सब अटेम्प्ट करना है, बस फिर करना चालू करेंगे फटाफट से, और मैं जिससे पूछूं बस वही आंसर बताएगा, है ना? ठीक है, और क्या रेडी भाई? सब लोग कॉपी पेन लेके फटाफट आंसर करना चालू करें। 5 मिनट्स इज एनफ फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, शुड आई सॉल्व दिस नाउ बेटा? सबने अटेम्प्ट कर लिया अपना? Yes, sir. ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो लुक एट द सॉल्यूशन नाउ।
You all know if the block is sliding upward slowly, the upward force should be equal to downward. और नीचे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? मैं जिससे पूछूं वो बोलेगा भाई। नैनिका बेटा कौन कौन से फोर्स लगेंगे नीचे? नैनिका बोल दो बेटा, बोल दो। देखो फ्रिक्शन लगेगा नीचे और ग्रेविटी के फोर्स का कंपोनेंट लगेगा नीचे। फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल आल्सो एक्ट डाउन, है ना? देयर विल बी टू फोर्सेस एक्टिंग डाउनवर्ड, फ्रिक्शन एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, these two will be downward. Okay, so now look at this. This is the block. Here you are applying the force, applied force. डाउनवर्ड फोर्स भी mg के कंपोनेंट है। mg ऐसे लगता है, उसका कंपोनेंट रिजॉल्व करके देखते हैं अपन। तो ये वाला कंपोनेंट आता है नीचे की तरफ, mg sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आता है mg cos। ठीक है बेटा, mg के कंपोनेंट आते हैं mg sin थीटा एंड दिस इज mg cos। देन इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो इंक्लाइन लगा रहा होगा। तो इंक्लाइन विल एक्सर्ट अ नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। ठीक है, तो ग्रेविटी के फोर्स mg को अपन रिजॉल्व कर लेते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स, दैट इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg theta. F applied will be upward, normal reaction is upward. Because the block is sliding up, friction will be downward, and friction is maximum, which is mu n. Friction is maximum, which is mu n. Because the block is moving upward, so displacement of block is upward. This is the direction of displacement. क्या यहाँ पे चलना आगे भी सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So सबसे पहले applied force, because the acceleration is zero, we are slowly pulling up. So slowly pulling up, so acceleration is zero. Because slowly pulling up कर रहे हैं, reaction zero. So upward force F applied must be equal to downward force, which is mg sin theta plus mu into n. And normal reaction will be equal to mg cos. So normal reaction mg cos के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर होगा भी सबको? Yes. Yes, sir. चलो अब एक एक करके सारा डायग्राम बनाता जा रहा हूँ। फोर्सेस तो मैंने लिख के एक बार तुमको दिखा दी। अब देखो जरा, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, द इंक्लाइन प्लेन। आपको सुनाई दे रहा है? अविशी सुनाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. So this is the inclined plane. This angle is 37 degrees. This was 5 meters. So this will be equals to 5 into 10 37. 10 37 होगा 3 by 4. Here are 5 into 3 by 4. Or this will be 15 by 4 meter. This will be equals to 5 by cos theta. 5 by cos theta is 5 into 4 by 5. So 25 by 4. This is 25 by 4 meters. I know this triangle law. अब एक एक फोर्स का, सबसे पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ए पार्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का फोर्स रहेगा नीचे की तरफ और 25 by 4, displacement is 25 by 4. The force of gravity is mg. This angle is how much? This angle will be 90 degree plus 37 degree. So work done is constant force is there. So work done will be F dot S, force 100, displacement 25 by 4, and cos of angle between them, cos 90 plus 35. Cos of 90 degree. What is cos 90 degree theta? Minus sin theta. Minus sin theta. Okay. So this is
625. Okay, 100 the code is also 25. 25 is equal to 625. And it is minus sine 37. Sine 37 is 3 by 4. Or this is coming out to be equals to 5 से काटे तो 1, 25 minus 375. तो ये बता ये आ रहा है 375. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो minus 375 joules work is done by force of gravity. पहला पार्ट समझ में आ गया इसका. A part is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's talk about force of friction. B part. Friction का force कितना वर्क करता है? I'm drawing the B part. Let's go for B part. अभी कोई आंसर किस का आंसर आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क का? कार्तिक तुमने आंसर निकाल लिया बेटा? Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है बोलो? Sir, 8 joules. 850. 8 joules. 8 जूल प्लस और माइनस Sir, plus प्लस 8 जूल. अमन तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? Plus 15. कितना? Plus 15. प्लस 50. Yes, sir. प्रखर क्या आंसर आ रहा है बेटा? क्या आंसर आ रहा है बेटा? क्या वो समझ नहीं आया, वापस बोलो. चैट में लिख दो बेटा, चैट में लिख दो, चैट में लिख दो. चलो सब लोग चैट में लिख दो, मैं चैट खोलता हूँ, उससे सब मेरे को आराम से दिख जाएगा. प्लीज राइट इन चैट, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट इन चैट. सब अपने भी आंसर चैट में लिख दो बेटा. प्रखर चैट में लिख दो. अमन का प्लस 50. ओके. तविशी 25 जूल्स. प्रखर तुम्हारा आंसर सर लिख दिया मैंने. चैट में? यस सर. क्या सर प्लस 50 जेई आ रहा है. अच्छा ठीक है. अच्छा बच्चों चलो देखते हैं. पहली बात तो फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता. इट हैज टू बी नेगेटिव. व्हाई? ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर है भाई? ऊपर. और फ्रिक्शन किधर लग रहा है? नीचे. तो फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क कैसे करेगा? फ्रिक्शन को तो नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा. सब लोगों ने पॉजिटिव आंसर दिए, तो पहले तो पॉजिटिव तो ऐसे ही गलत है. इट हैज टू बी नेगेटिव. जब ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है, इट इज डिस्प्लेसिंग बाय हाउ मेनी मीटर्स? 25 by 4 meters. And friction is acting backward. This is friction force, which is equals to mu n. mu की वैल्यू मैंने 0.1 दी थी और नॉर्मल रिएक्शन वाज mg cos theta. mg cos theta. So this is equals to 0.1. Mass of the block was 10. G 10 cos 37 is 3 by 4 by 5. क्या यहाँ तक दिक्कत है भाई? किसी को समझ आई बात? यस सर. Okay, and this is coming out to 40 by 5, so this is coming out to 8 न्यूटन. तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लग रहा है पीछे की तरफ 8 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड 25 by 4 मीटर. एंगल भी देन इज 180 डिग्री. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स will be force into displacement and angle V then is cos of 180 degree. It's a negative work in done. So it is coming out to be minus 50 joules. समझ आ गया अभी सबको? yes, sir. यस सर. ओके. तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता ना बेटा, तो मतलब पॉजिटिव तो आंसर आ ही नहीं सकता. सी पार्ट. So I'm going for C part of the problem. You have to find work done by normal reaction and work done by applied force. C part पे जाते हैं. Let's look at applied force. C part. F applied. Applied force कितना था? क्योंकि एक्सेशन 0 था इसलिए upward force was applied force and downward forces was force of gravity plus friction force. Because there was no acceleration, hence upward force should be equal to downward.
applied force should be equal to this. So let's first calculate the applied force. F applied will be equal to mg sin theta plus mu mg cos theta. M was 10, G is 10, sin 37 is 3 by 5, mu 0.1, M is 10, G is 10, cos 37 is 4 by 5. This comes out to be equals to how much? To 660. This comes out to be how much? This is 40 divided 8. So this comes out to be 68 Newton. So now applied force is 68 Newton and displacement is also upward by 25 by 4 meter. So work done by applied force is equals to force, displacement and cos of angle will be there, which is cos of 0 degree. Or this comes out to be 68, 4 से करें तो ये होता है 2, 1, 28, 7, 17 into 25. 17, which is 0 divided by 4. So that comes out to be 4, 16, 110, 2, and that comes out to 4, 10, 2, 25, 425. ये आंसर आ रहा है बेटा 425 जूल्स? Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? Yes. ठीक है, so this is the way we calculate. And last was work done by normal reaction. ठीक है, work done by normal reaction. Work done by normal reaction. And this will be 0. Why it should be 0? Because normal reaction is perpendicular to the surface and displacement is along the surface. The angle means there is 90 degrees. So therefore work done will come out to be 0. Work done is 0. Whenever force is perpendicular to displacement, it will not do any work because dot product is 0. So normal reaction का magnitude, displacement का magnitude and cos of 90 degrees will then be 0. समझ आ गया? Is it okay? Yes. Okay, so we'll have a break of 5 minutes, then we restart from here.